Yesterday we talked about this much. Now we are talking about the scale of integration. So when we say smaller scale integration, it means on a single chip we can put up to 100 transistors, and from that we make a circuit. So that is small scale integration. Then on medium scale, this number goes from 100 to 1000, and transistors there. The transistor is like a basic building block. So that is why when we are talking about the scale of integration, we are talking about how many transistors we can incorporate on a chip. तो अभी तो हम लोग एक अलग अलग ट्रांजिस्टर पढ़े PN and we have seen it some on labs. So we have done some experiment. So you may see some. We are just trying to recall that we know transistors in that way. When we are talking about integrated circuits, and then we are talking about the scale of integration, why we are so much concerned about number of transistors. So that is what I'm trying to convey, that most of circuits like amplifier, oscillator, analog. So we have transistors in there. So transistors are very basic component in electronics to perform anything, to make circuit, to make the amplifier, oscillator, and a lot of other devices. So that is why we are talking about number of transistors. If number of transistors are more on single chip, then we can make a lot of things for. If we can try to do big circuit, this integrated circuit, when we are talking about IC, तो IC मतलब उसमें बहुत सारा सर्किट है और बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म में बना हुआ है। तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में जो सर्किट बना हुआ है उसमें नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर जब बढ़ेंगे तो हमारी एबिलिटीज बढ़ेंगे, हम ज्यादा कुछ उसमें कर पाएंगे। तो इस तरह से क्या हुआ, टाइम के साथ साथ इस इंटीग्रेशन के जो रेंज था उसके कैपेसिटी हमारा बढ़ता गया। एंड हाउ इट वाज पॉसिबल, इट इज बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। जो हम लोग बनाना चाह रहे हैं, एक सिंगल चिप में इतना सारे ट्रांजिस्टर बनाना चाह रहे हैं, तो वी नीड टू हैव वेरी फाइन, वेरी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे हमारा इम्प्रूव हुआ, ऐसे हम लोग का स्केल इंटीग्रेशन कैपेसिटी बढ़ता गया। एंड रिजल्ट इज दैट we have more complex devices, more efficient devices, and even cheaper. If you see, a lot of things are getting costly, but electronics somehow is getting more accessible to people. If you remember, if you look at last decades and even today, तो क्या हो रहा है, ये इसी सब की वजह से हो रहा है कि हम ज़्यादा चीजें कर पा रहे हैं, इंटीग्रेशन का स्केल जैसे बढ़ गया, सो वी आर हैविंग मोर एफिशिएंट डिवाइसेस। और जैसे पता है कि आईसी बनाने में खर्चा कम लगता है, अगर हम एक डिस्क्रीट सर्किट बनाएं तो इट विल कॉस्ट मोर। सो दैट इज व्हाई कॉस्ट इज रिड्यूसिंग, और डिवाइसेस आर बिकमिंग कॉम्पैक्ट। जैसे पहले टीवी, जैसे हम लोगों ने सीआरओ पढ़ा, बोला कि टीवी का इतना बड़ा पीछे से एक कोन जैसा स्ट्रक्चर होता है। So now today we have replaced CRO by new technology. So our TV is very compact and it is more convenient, and we feel more comfortable with compact and efficient devices. So this is how, this is the way we are changing. We are having technology to scale up our integration. We are the industry. What we see, like a semiconductor industry, like electronic devices, which depends upon electronic semiconductor industry. So we see the impact, reduction of cost, and better technology, better efficiency with those devices which we use. So it is because of upgradation of technology. We have better technology and we can scale up the integration. So now I hope you understand what when we are talking about a small scale integration, medium scale integration, large, very large, ultra large, that's it to me. Now if we go to different groups,
you may have slightly different names, like when we are talking about small, medium, large, and very large, ultra large, giga large. A lot of these kind of names are there, and if they change their name, so their numbers may be different. So this number is like a, is not something कि इसमें 100 हम लोग बोले कि 100 ट्रांजिस्टर डाल सकते हैं, जैसे 101 हुआ ऐसे ही उसका क्लास चेंज हो गया, ऐसा कुछ नहीं. वी आर जस्ट ट्राइंग टू गेट एन एस्टिमेट when we are talking about these scales of integration. We are just trying to get like a generation gap. Small scale is like there was a generation when we had technological ability to do up to this. Then we upgraded our technology. We had a better tools to accelerate our education process. So we came to this stage. So this is how things go like this. एंड ऐसा भी नहीं है कि अभी हमको कुछ सिंपल सर्किट चाहिए, अगर उसमें हमको 100 ट्रांजिस्टर सिंगल चिप में, मतलब ऐसा भी सर्किट चाहिए, तो ऐसा नहीं कि ये अभी डिस्कार्ड हो गया, इसका कुछ मतलब नहीं. इसका भी मतलब है, जैसे हम एक सिंगल चिप पे 100 अप टू 100 ट्रांजिस्टर incorporate कर रहे हैं. So we have a lot of circuits where we need that kind of IC. So it is not there, it is not useful. But there was a time when we had only this, and now it is a time where we can do this, and still all this is always there because we have moved from this to this. So when we are talking about scale of integration, it means this is small scale integration is not irrelevant, but there is time factor is also there, and a development in the course of time is also there to play a role, and still they are relevant. They are not irrelevant. Like it's small scale integration, medium scale integration. It also has its value at this present time, and our capacity has increased up to this. So this is the thing. I hope you understand this concept of scale of integration with the ICs. So after that, if you see, this is a very interesting development. If you see, this industry starts quite recently. It is not very old. So this is it is called Moore's law. Whatever you pronounce it, but you can say Moore, sometimes Moore. So Moore's law, the number of transistors on integrated circuit chip from 1971 to 2015. So it is basically a plot, a graph, where we are plotting here time from 1971 to 2018. कैसे इस स्केल पे टाइम चेंज हो रहा है. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक सिंगल चिप में कितने सारे ट्रांजिस्टर काउंट डाल पा रहे हैं, कितने सारे ट्रांजिस्टर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं ऑन अ सिंगल चिप. सो दिस इज द नंबर. सी the numbers are increasing here, time is increasing this way. It seems this one is quite linear kind of, and if you look at this scale is not linear. So when we look at a graph, all these things matters. You need to look how data is presented. So by looking this graph is a very important tool when we are doing physics. When you do science, we see the importance of graph. From one graph, we can get a lot of information about the process. So this is a graph where it says on the course of time, in the course of time, like 1970 से 2018 तक, अगर हम लोग ऐसे चले तो क्या होता है, ये जो हमारा ट्रांजिस्टर इनकॉर्पोरेट करने का कैपेसिटी है, इट इज इंक्रीज. जब हम लोग 1974 में थे, तो वी हैड कैपेसिटी समथिंग लाइक, इफ यू सी दिस is an IC. This is probably ICs kind of IC we were able to produce. So if you see 74,
This was about 4,000. We can incorporate about 4,000 transistor on a chip. And then as time grows, we could develop better technology to make integrated circuits with high number of transistors. So now this is the plot where at the different time what kind of ICs we had. Now what we can conclude from that कि जब यहाँ पे थे तब तो हमको नहीं पता था कि हम 2008 में 2010 में कहाँ पे होंगे. We had no idea because research is a continuous thing. जब हम कुछ नया खोज रहे होते हैं तो हमको ये पहले से नहीं पता होता है कि हम ये खोज पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे या टेक्नोलॉजी ऐसा होगा. Which at that time when people were making integrated circuits with 1,000 transistors, they if you say कि अभी इतना सारा नंबर है 10 लाख 15 लाख ट्रांजिस्टर हम एक सिंगल चिप में बनाएंगे, तो एट दैट टाइम इट इज अनबिलीवेबल. तो नहीं मानेंगे, लोगों को लगेगा कि इट इज नॉट पॉसिबल. एंड बट आफ्टर सम टाइम वी हैड दिस. सो व्हाट इट shows, this picture shows that there is an trend कि जैसे अभी इसको हम एक लाइन में फिट करना चाहे, so this data is not very random. It shows a trend. It is a line. तो क्या हो रहा है, एक ट्रेंड है डेवलपमेंट का. हर साल में हमारा कुछ कैपेसिटी बढ़ जा रहा है and that capacity increases like this. So when we are in 2020, then if say कि इतने साल के बाद क्या होगा, अगर हम बोले कि 10 साल के बाद हमारा इंटीग्रेशन स्किल का कैपेसिटी क्या होगा, so we can't predict as of now, but if you look at this trend, we can say something, we can give some number. Okay, that number has no मतलब ऐसा कुछ फ्यूचर में हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी आ जाएगा, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी नया ढूंढ रहे हैं. हमको ये जरूरत है कि हम ऐसी आईसी बना पाए जिसमें और ज्यादा से ज्यादा नंबर transistors incorporate कर पाए. But there is a lot of limitation, a lot of technological advancement, and this a lot of factors, a lot of uncertainty is there. तो इस सब सिचुएशन के बाद भी हमको जब ये ट्रेंड दिख रहा है, उस ट्रेंड के बेसिस पे हमें कह सकते हैं कि इतने साल में इतना सारा कैपेसिटी हमारा बढ़ता रहा है, तो आगे भी बढ़ता रहेगा, ऐसा इस डेटा के बेसिस पे कहते हैं. तो दिस इज मूर्स लॉ. मूर्स लॉ says, Moore's law describes the empirical regularity that the number of transistors on integrated circuit doubles approximately every 2 years. तो इन्होंने क्या किया, ये प्लॉट बनाया इस तरह का और एक प्रेडिक्शन किया कि करीब 2 साल में जो ट्रांजिस्टर पे जितने ट्रांजिस्टर हम सिंगल चिप पे कर पा रहे हैं अभी, 2 साल में हम उसके दोगुना कर पाएंगे. ऐसा ट्रेंड उन्होंने देखा एंड ही गिव एन एम्पिरिकल लॉ. एम्पिरिकल लॉ ये होता है जिसमें हमको कोई डायरेक्ट मैथमेटिकल टाइप का ऐसे कुछ लीनियर तरीके से या हम जो प्रेडिक्शन कहते हैं वो कुछ पुराने डेटा को देख के कहा जाता है. उसका मतलब ऐसे जैसे हम बोले is equal to mc square. This is the formula where we can say if you burn this much mass, you will get this much energy. This is the scientific formula which follows the law of nature. But when we give some empirical formula, empirical regularity, so it means हम system का study करते हैं and then we look at its trends and we come to some conclusion. But that conclusion is not like law of nature kind of thing. It is possible कि तुम 2 साल में तुम्हारा टेक्नोलॉजी सैचुरेट कर गया, तुमने नया टेक्नोलॉजी ढूंढ नहीं पाया 2 साल में और तुम्हारा इंटीग्रेशन इसके दोगुना नहीं हुआ. So you can't blame anybody for that. But by looking at trend of 50 years, we see this kind of trend. So on that basis, Moore's law says कि करीब 2 साल में जो हमारा कैपेसिटी होता है इंटीग्रेटेड सर्किट में ट्रांजिस्टर इनकॉर्पोरेट करने का, वो 2 गुना हो जाता है. यही मूर्स लॉ है. तो ये क्या हुआ, बहुत बार ऐसा टाइम आता है जब ऐसा लगता है कि अभी भी मतलब when we are at this stage
So sometimes it comes like अभी हमारा टेक्नोलॉजी सेचुरेट हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज टू मच, ऐसा करके आएगा. एंड आफ्टर सम टाइम यू विल हैव a new technology because a push from industry, push from demand, जो लोगों को चाहिए, जो सोसाइटी को जिस चीज की जरूरत है, so there is always funds available, there is always you can do good research on that. So हम अभी तक ऐसे ऐसे होता रहा है कि लगातार कुछ ना कुछ नए नए टेक्नोलॉजी आते हैं जिससे हमारा जो इनकॉर्पोरेट करने की कैपेसिटी है वो बढ़ते जाता है. तो मूड स्लाइड्स काफी हद तक सही है. तो ये आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मूड स्लाइड. बेसिकली एक ट्रेंड्स देखा उन्होंने टाइम के साथ साथ, जो इंडिकेटर सर्किट्स है उसमें हम कितने ट्रांजिस्टर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, उस ट्रेंड के बेसिस पे एक बात कही कि लगभग 2 साल में जो हमारा ट्रांजिस्टर इनकॉर्पोरेट करने का कैपेसिटी है वो 2 गुना